Now, history is the study of past. History provide an information which was happened in past. History consists all things which around us like tradition, cultures, currency, educations, weapons, equipment, etc. Now, introduction. History is the study of life in society in past in all its aspect in relation to present development. इतिहास एक भूतकाल में हुए किसी भी समाज या राज्य की घटनाओं का संग्रह होता है. इतिहास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारी जीवन प्रणाली में. History is or should be an attempt to rethink the past. Klinghood particularly interested in this concept of history. History aims at helping students to understand the present existing social, political, religious and the economic condition of the people. इतिहास विशेष रूप से राजनीतिक, धार्मिक और अर्थव्यवस्था को दर्शाती है और इन सभी पर समाज के द्वारा की गई गतिविधियों का प्रभाव को दर्शाती है. इतिहास के माध्यम से भूतकाल में हुए घटनाओं को समझा जा सकता है और उसे भविष्य की योजनाओं में सुधार किया जा सकता है. हिस्टोरी इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ द ह्यूमन पास्ट इनेबलिंग अस टू स्टडी कंटिन्यूटी एंड चेंजेस दैट आर टेकिंग place over time. It is an act of both investigations and imaginations that seeks to explain how people are grow. Next, the nature of history. The present has evolved out of the past. Modern history enables us to understand how society has come to present. आधुनिक इतिहास हमें समाज के प्रति घटित घटनाओं को सूचित करता है और वे घटनाओं को जानकारी हमें भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है. हिस्टोरी इज द स्टडी ऑफ मैन. हिस्टोरी डील्स विथ मैन स्ट्रगल थ्रू द एज. हिस्टोरी इज नॉट statics by selecting individual biography and the presenting their life appropriate social context and the ideal human context to understand. History is concerned with man in time. It deals a series of events and each event occurs at the given point in time. इतिहास एक समय दर सीमित होती है और इतिहास के माध्यम से ही हमें आगे की ओर बढ़ते रहने की स्रोत भी मिलती है. In fact, is that the process of human development. Objective records of happening. Every precaution is taken to base the data on original sources and make them free from the subjective. इतिहास के जरिए हमें जानकारी तो मिलती है जिससे हम भूतकाल में हुए घटनाओं को समझे जा सकते हैं और आधुनिक इतिहास हमें पौराणिक इतिहासों के बारे में डिफरेंसेस करती है. Modern history has gone beyond the traditional status of an antiquarian leisure time pursuit to a very useful and indispensable. आधुनिक इतिहास हमें पौराणिक कथाओं से अलग कर देती है जिसमें हमारे ज्ञान तथा शिक्षण को आगे की ओर ले जाती है. हिस्टोरिकल सोर्स मटेरियल. हिस्टोरिकल सोर्स आर ट्रेसेस लेफ्ट बिहाइंड द पास्ट. ए हिस्टोरियन ट्राइज टू कंस्ट्रक्ट ए सिस्टमेटिक अकाउंट ऑफ द पास्ट. These are follows: archaeological sources, literacy sources, oral tradition. Let we discuss the archaeological. इतिहास के मुख्य स्रोतों को हम देखें तो एक क्या दिखाई देगा कि जो भी हमारे आर्कोलॉजी सोर्सेस हैं, लिटरेसी सोर्सेस है एंड इपिग्राफिक सोर्सेस है, उसके बारे में डिस्कस किया जाते हैं. आधुनिक इतिहास और पौराणिक इतिहास को दोनों को कंबाइनिंग लेकर चला जाए तो दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस दिखाई देंगी. एनीवे, लेट वी डिस्कस अबाउट द आर्कोलॉजिकल सोर्सेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, मोन्यूमेंटल फाउंड, building, image, poetry and the terracotta figures and other antiques are the monumental find. Ancient building are the monumental facts. Now we discussed epigraphic. India is a very rich in such authentic source consisting of inscriptions of stone pillars, rocks, copper plates, bricks, seals, terracotta, image. Epigraphy gives the constant evidence of the past. Scare or religious literatures. In India, this include the four Vedas describing the social and political life of the Indo-Aryans. The Kalpasutra are the manuals of the ritual throwing light
on the development of science of geometry and the architectures in ancient India. Now we discuss about the secular literatures. It include novel, drama, poems, books on medicine, grammars and the astronomy, that is the secular literature. इसके अंतर्गत उपन्यास, नाटक, कविताएं, पुस्तक, दवाएं, यात्राएं आदि माध्यम से इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है. Let me discuss about the oral traditions. The novels dates the heroic exploit. The local heroes may not be mentioned in the general history of India, but they live on the oral form. Todd's Annals of the Rajasthans are the mostly based on the local tradition for the reconstructions. Now we discuss about the classification of the primary and secondary sources according to the data. There are two types, that is one, primary sources, also called original source. This include primary data, the account prepared by the person directly connected with an event or eyewitness. That is, the eyewitness is also a primary data. Now the second we concern about the secondary data, known as the secondary data. These are prepared by those persons who were not directly connected with the actual happening, but who prepare their account with the help of eyewitness, like the standard historical works based on the work. So here the story, it includes the novel. We already learned that the secular literatures, that is include the drama, poems, books, etc.